मोदी जी का एक सपना है कि ये देश विकसित भारत बने। नागरिकों का कोई भी सेक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे व्यापारी हो, हर क्षेत्र को वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। जिस कानून की उपयोगिता नहीं है, नागरिक डरता है, परेशान होता है, तो ऐसे हमने 1486 कानून रद्द कर दिए। अभी 76 और हम रद्द करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत बोल्ड स्टेप उठाया कि ये आधुनिक युग में और सभ्य समाज में 3 बार किसी ने तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद महिलाओं में एक एम्पावरमेंट का भाव आया मुस्लिम महिलाओं में। प्रधानमंत्री जी का वो धन्यवाद करने आई थी, तो मुस्लिम महिलाओं ने इतना धन्यवाद दिया कि ऐसा कोई विजनरी प्राइम मिनिस्टर ही ऐसा कदम उठा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी दी। युवाओं के हाथ में पत्थर था 370 हटने से पहले, 370 हटने के बाद युवाओं के हाथ में कंप्यूटर आ गया, वो एजुकेशन की तरफ बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगर भूकंप आ गया तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं इस पे तो चोट करूं और इस पे नहीं करूं, देखेगा क्या? अब हमारे एक्शन के पॉइंट क्या होने चाहिए? अर्थ, इसको हम ठीक रखें, मतलब हम उसको पॉल्यूट नहीं करें। क्या हम ये प्लेज ले सकते हैं आज कि हम धरती माँ को पॉल्यूट नहीं करेंगे? छोटे छोटे एक्शन, प्लास्टिक को नहीं फेंकेंगे, कचरा ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा हम धरती को खोदेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हम यूरिया नहीं देंगे, ये सब चीजें छोटे छोटे एक्शन, तो हम अर्थ को ठीक रख सकते हैं। Gives me a great pleasure to be here with this August morning to be a part of International Conference on Environmental Laws and Constitutional Rights, a global perspective. In the 21st century, with innovation and modernization taking the world by storm on an everyday basis, we have reached a consensus that now more than ever, the most pressing issue is that of environmental protection. With the threat of global warming and increased loss of biodiversity looming over us, it is extremely pertinent that we discuss how to remedy the same. While the challenge to pollution is a global one, the impacts are overwhelmingly felt in developing countries. About 95% of adults and children impacted by pollution-related illnesses live in low and middle-income countries. Often the waste of pollution affects us, can be lost on us in the short term or even remain underreported. For instance, around 2.4 billion people worldwide, that is around 1/3 of a global population, cook using open fires or inefficient stoves fueled by kerosene, biomass and coal, which not only generates harmful household air pollution, but also is a cause for many serious illnesses. There are estimated around 3.2 million deaths in 2022, with 2,37,000 deaths of children under the age of 5. पंजाब की इस पावन और पवित्र धरती पे ये कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे हो रही है जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की मेज़बानी कर रहा है, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के ऐसे इश्यूज़ पे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे आगे आती है और काम करती रहती है। और एनवायरनमेंट को लेके हम पिछले 3 साल से, ये 3rd एडिशन है, इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस हम करवा रहे हैं। पंजाब की इस पावन पवित्र धरती पे मैं गुरु नानक देव जी की श्लोक से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हमारे गुरुओं ने, हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले, UN की होंद से भी पहले हमें जो लेसन दिया, हमें जो टीचिंग्स दी कि नेचर, जलवायु हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमने कैसे इसकी हिफाजत करनी है और इसका सत्कार करना है, इसकी पूजा करनी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारे देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एनवायरनमेंट के मुद्दे पे सोशल इंटर्नशिप शुरू की है।
एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फील्ड में जाके काम करे ताकि वो उस चीज़ का एहसास कर पाए। We have been engaged, humanity, all around the globe, engaged on talking about the wealth of nations. Our focus was on meeting human needs through development of the wealth of nations. But little did we realize that the wealth of nations cannot be and need not be necessarily the only indicia of human fulfillment and comfort. Now we begin to talk about the health of nations, where a focus on the health of nations is missing. I'm sure the developmental goals of humanity all around can miss the most important point about what does it ultimately mean comfort for meeting human needs and human solace. Therefore, we need to talk about not only the wealth of nations in isolation, the health of nations in isolation, but a marriage of both. Then we've been able to manage our definitions and statutes reasonably well, except, of course, when courts find fault with the definitions of legislatures. But we're not in a position to define something very important, namely defining sustainable development. We keep talking about it. We talk about proportionality principles. We talk about all the other environmental principles and doctrines, which will probably throw some light and guidelines on how courts and policymakers can enter into the debate and defining what is sustainable development. But that's an enigma. That's a challenge. It's a civilizational challenge.